everyone, welcome to my YouTube channel. I'm Himani and here I am with my weekly horoscope for the coming week, that is 23rd of March till 29th of March as per your moon sign. So it's a general reading. Again, I am requesting you, please watch this video as it will help you to plan your week accordingly. I will put down timeline description of all the zodiac signs, so please check the description box, go to your timeline and go to your zodiac sign and watch the video. अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, खाली आप वॉच कर रहे हैं, तो रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. मुझे मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोस बनाने का और आपको मोटिवेट करने का. ऑल्सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट द गाइडेंसेस. For any personalized readings or assistance, my email id, my social media handles, Facebook, Instagram, Twitter, all will be there in the description box. Reach out to me through these channels. Also, please subscribe to my channel. So without wasting any time, let's get started. So पहला zodiac sign है Aries, that is मेष राशि. So let's see the card for Aries. Okay, so Aries, for you the card which I have pulled out is 7 of Summer, which means no more procrastinating. तो प्रोक्रास्टिनेटिंग मत करो, कल का काम कल पे, आज का काम आज परसों पे, नो. So this card is guiding you, no more procrastinating. Your power comes from making a decision. So आपका power decision बनाने से आता है. So you have to make the right decision. आप कल सोचोगे, परसों सोचोगे, उन सब से कुछ नहीं होगा. यू हैव टू मेक द राइट डिसीजन. योर पावर विल कम फ्रॉम मेकिंग अ डिसीजन. कंफ्यूजन दैट अराइजेज फ्रॉम ओवर एनालाइजिंग द ऑप्शन. सो यू हैव टू कम टू द कंक्लूजन. अगर आप ऑप्शन ही देखते रहोगे तो कंफ्यूजन अराइज होगी, और आप ओवर एनालाइज करोगे सिचुएशन को तो और ज़्यादा कंफ्यूजन आएगी. सो स्टॉप over analyzing the options, choose the right option with proper research, make the correct decision. So your power is through making the correct decision. All the best, Aries. Now let us move ahead with the next zodiac sign, that is Taurus, वृषभ राशि. Let's see the guidance for Taurus. So चलो देखते हैं क्या कार्ड निकला है. Okay, for Taurus the card is 9 of Winter, which means unfounded fear. So your mind is working 10 times more and you are thinking about worst situations. आप नेगेटिव सिचुएशंस के बारे में सोच रहे हो, नेगेटिव सिनेरियोज को सोच रहे हो, आपके अंदर कोई डर है. सो यू आर हैविंग इंसोमेनिया, यू हैव स्लीपलेस नाइट्स, ज़्यादा ही सोच रहे हो. आप अपने दिमाग में वरी को ग्रो कर रहे हो एंड वरी कैन कॉज प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ. सो सल्यूशन क्या है? नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में बदलो एंड यू विल डेफिनेटली फाइंड द सल्यूशन. टॉरस, don't focus on worst situations, negative thoughts, unfounded fear. Nothing will help you in getting the right solution. So peace of mind, positivity will give you the right solution. So all the best, Taurus. Now let us move ahead and check the guidance for Mithun Rashi, that is Gemini. Let's see what is the card for Gemini. Okay, so Gemini, for you the card is Queen of Spring, which means this week you are very friendly and loyal to your loved ones. You have extreme talent, आप पे बहुत ज़्यादा talent है. You are very ब्रिलियंट. सो यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ. आपको अपने पे भरोसा करना चाहिए. दिस इज़ द राइट टाइम टू बिलीव इन योर सेल्फ. There are wonderful people in your environment who are ready to help you in your business or in your venture or anything you want to start. They are ready to help you. So you have to maintain a balance between your work and home life. Proper balance will always give you success. So Gemini,
बैलेंस बना के रखो अपने घर और अपने काम में. टू मच ऑफ वर्क और टू मच ऑफ responsibilities at home will disturb your life. So you have to maintain a balance between your work and home. At the same time, you have to believe in yourself. Whatever you want to start, go ahead. There are people who are ready to help you. So all the best, Gemini. Now let us move ahead for Kark Rashi, that is Cancer. Let's see the guidance for Cancerians. Okay, so Cancerians, for you the card is Prince of Summer. So Prince of Summer means this week you are very flirtatious or you are very romantic. If you are single, you are ready to fall in love suddenly. So एकदम से आपको प्यार हो जाएगा. वो कहते हैं ना लव एट फर्स्ट साइट, बट कभी कभी लव एट फर्स्ट साइट इज नॉट गुड. इट माइट लैंड यू टू टू मच ऑफ इमोशनल एक्सपीरियंस, और जैसे ही वो आपके पैरों से निकल जाएगा यू माइट फील disappointed, you might feel sad. So you have to stay grounded. Don't fall in love suddenly. Slowly and slowly take necessary steps. So in case if it is swept away from your feet, you are not disheartened. So you have to be more careful, because you might land up to emotional experience, and too much of emotional experience can sometimes lead to disheartened, disappointment. So you have to be careful. All the best, Cancer. Now let us move ahead for Leo, that is Singh Rashi. Let's see the card. Okay, so Leo, for you the card is Four of Winter, which means this week you need to set aside all your concerns and make the decision later. इस वीक आपको डिसीजंस नहीं लेने, क्योंकि आपका माइंड स्टेबल नहीं है. यू हैव लॉट ऑफ इश्यूज, लॉट ऑफ कंसर्न्स. तो आप इस समय अगर डिसीजन लोगे, दिस डिसीजन माइट लैंड इनटू ट्रबल, मेक यू ट्रबल, और दिस डिसीजन विल नॉट द राइट डिसीजन फॉर यू. सो यू शुड leave for the time being. Don't make any decision, because impulsive decisions will sometimes is not good. Also set aside your concerns, relax, go out for a vacation, or take an extra sleep, take a leave, and take a leave from your workplace and have a proper sleep. Go out in nature, meditate. Definitely you will find the right solution. आपको सल्यूशन ज़रूर मिलेगा. उसके लिए आप ऑफिस से छुट्टी ले लो और आप थोड़ा सा आराम कर लो. आप वेकेशन पे चले जाओ या गार्डन में जाके मेडिटेट कर लो, वॉक कर लो, एंड डेफिनेटली आपको सल्यूशन मिल जाएगा. यू विल डेफिनेटली फाइंड सल्यूशन, लियो. ऑल द बेस्ट. चलिए लेट अस मूव अहेड फॉर कन्या राशि, वर्गो. लेट्स सी व्हाट इज द कार्ड फॉर वर्गो. ओके, Virgo, for you the card is Queen of Summer, which means this week you should listen to your heart. You have intuitive ability, so whatever your heart says, go ahead and make the right decision. इस week आप emotional भी हो सकते हो. You might be too much of emotional. You are very caring, loving, but at the same time you might take care of your loved ones too much and not taking care of yourself, so that might make you fall ill. So it is better to take care of others, at the same time take care of yourself. Don't take too much care of others without thinking about your health concerns. So you have to be careful, take care of others, at the same time take care of yourself. You should listen to your heart, you should listen to your instincts. You can trust your instinct. So whatever your intuition says, whatever your instinct says, this will be the right thing for you. So listen to your heart and make the right decision. All the best, Virgo. Chaliye, let us move ahead with the next zodiac sign, that is Libra. तो तुला राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है, चलिए चेक करते हैं. ओके, so for Libra we have the card the Sun. So the Sun is a very positive card, Libra. So you can plan your work and it will definitely work out perfectly. So आप जो भी करोगे
Your work will go out perfectly. It is the right week for you. So whatever challenges you faced last week, it is going to get over. आपके पास अमेजिंग आइडियाज़ है, वो डेफिनेटली आपको रिवॉर्ड्स एंड कमेंडेशंस दिलाएंगे. सो यू हैव टू implement those ideas this week. It is the right week for you to implement those amazing ideas which you have in mind. Also, you have to gratitude to the universe for the blessings of life. So whatever blessings are coming your way, have gratitude towards universe and be happy. So all the best, Libra. Chaliye, let us move ahead with the next zodiac sign, Scorpio. Let's see the card for Scorpio. Okay, Scorpio, for you the card is 10 of spring, which means you are taking burden of others. You have too much of responsibilities. आप दूसरों का काम भी कर रहे हो, आप अपने सर पे बर्डन ले रहे हो दूसरों के काम का. लर्न टू से नो. आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर. दूसरों से मदद मांगो. डोंट डू टू मच ऑफ वर्क ऑन योर ओन. डेलीगेट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज. So this week you are working and no time for enjoyment. You have too much of responsibilities. Your shoulders are paining with too much of responsibilities. So कभी कभी नो करना भी सीखो और अपने ऊपर ज़्यादा बर्डन मत लो, अदरवाइज यू विल लैंड अप टू स्ट्रेस, एंजाइटी. आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स and enjoy the moment as well. All the best, Scorpio. Let us move ahead with the next zodiac sign, Sagittarians. Let's see the card. Okay, so Sagittarians, for you the card is 4 of spring, which means be grateful. You have much to celebrate. Grateful रहो, आपके पास बहुत सारा टाइम है सेलिब्रेट करने के लिए. अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करो, फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करो. आपकी एनिवर्सरी भी हो सकती है, हाउस वार्मिंग पार्टी भी हो सकती है, आपको सैलरी हाइक भी मिला हुआ हो सकता है, प्रमोशन मिल सकता है. तो इन्जॉय दीज मोमेंट्स, सेलिब्रेट विथ योर फैमिली. देर इज़ अ डीप फीलिंग ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस. आप खुश हो और एक शांति है आपके मन में. सो यू आर फीलिंग पीस एंड हैप्पीनेस. सो इट्स अ सेटिस्फैक्ट्री पर्सनल लाइफ. तो बहुत अच्छी कंटेंटेड पर्सनल लाइफ है. इंजॉय करो दिस वीक. बी ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स. ऑल द बेस्ट, सैजिटेरियंस. चलिए, लेट अस मूव अहेड with the next zodiac sign, Capricorn. Let's see the card. Okay, so Capricorns, for you the card is strength, which means the grace and inner strength needed to overcome challenges. So जो भी challenges आए हैं, आने वाले हैं या हैं आपकी लाइफ में, you need to have that inner strength and courage to face all these challenges. Also ये week आपके पास पावर है टू बी काइंड टू अदर्स एंड फॉरगिव. तो आप फॉरगिव करो एंड मूव ऑन. अगर आपकी लाइफ में किसी ने आपको धोखा दिया है, परेशान किया है, फॉरगिव देम एंड मूव ऑन. इट्स द टाइम टू एम्ब्रेस योर सेल्फ, हाउ वंडरफुल यू आर. आप कितने अच्छे हो, आप उस चीज़ पे बिलीव करो और अपने आप को एम्ब्रेस करो, अपने आप के ऊपर बिलीव करो. बी काइंड, बी गिविंग. फॉरगिव कर दो जो भी, जिसने भी आपको परेशान किया है, तंग किया है, जो. एंड हैव द इनर स्ट्रेंथ एंड करेज. ऑल द बेस्ट, कैप्रिकॉर्न. चलिए, लेट अस मूव ऑन टू अक्वेरियस, कुंभ राशि. सो अक्वेरियस, फॉर यू द कार्ड इज 2 ऑफ विंटर, विच मीन्स दिस वीक यू आर इनडिसाइसिव. आपके दिमाग में इनडिसीजन है, आप चूज़ नहीं कर पा रहे कि क्या चूज़ करना है. देर आर choices available and you are confused, you are indecisive, you are trying to please others rather than what is good for you. So that is confusion going on. So stop this, be practical, don't go into too much of emotions and pleasing others. You are trapped between your mind and your heart, intellectual and the emotion, and that is causing you confused. So Aquarius, I would suggest you to be practical and choose the right option which is good for you rather than which is going to please others. So it is your choice, you are responsible for it. All the best, Aquarius.
Let us move ahead with the last zodiac sign, Pisces. So for Pisces, we have the card 5 of spring, which means there is lot of competition, opposing goals arising from different opinions. लोगों के different opinions है, people are fighting for their opinion to get heard, and you are feeling that you are odd man out. बहुत ज़्यादा कंपटीशन है मार्केट में, सो यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ. आपको लोगों से अलग बन के दिखाना है, सो यू हैव लॉट ऑफ प्रेशर ऑन यू, बट you have to prove it. I know there are a lot of overly ambitious people you have come across this week, Pisces, and you are feeling odd man out, but you have to prove yourself. You have to show them that you are the right choice for this work, you are the right person for this opportunity. So all the best, Pisces, and thank you everyone for watching as usual my weekly horoscope. I hope these guidances will help you to move towards the correct path. So till then, take care, bye bye, have a great week ahead.